Okay, so hello and welcome to Wise IAS Academy, and I am your Indian polity teacher. I will be teaching fundamental rights today. Fundamental rights. Fundamental rights. Okay, so as per the Constitution, it is in the part 3 of Indian Constitution, and it is borrowed from Bill of Rights. Bill of Rights, that is an US Constitution. Okay. So before going to fundamental rights, we need to understand three concepts within that. Okay, what is freedom? एक तो freedom क्या है? Okay, first. Second is freedom. What is rights? Or you can say the freedom and liberty. Okay. Rights and duties. Okay. So, what is freedom? Freedom का simple sense क्या होता है? हाँ? Free what? In what sense? Actions है, restrictions नहीं है. हाँ, ठीक है. There is an action. Okay, so freedom simply means absence of restraint. Okay, the absence of restraint. Restraint का मतलब restriction नहीं होना. Okay, absence of restraint first. So when we start freedom, okay, that is absence of restraint. So the idea of freedom, ये सारी चीजें whatever you see in the today's what you're living, जो सोसाइटी में तुम रह रहे हो या जिस पर्टिकुलर पीरियड में यू आर लिविंग, okay, this entire period is actually influenced by the Renaissance. सारी चीजें, okay, either you talk about science and technological development, तो origin उसका वही मिलेगा आपको. Okay, you talk about the political growth, you talk about the social growth, you will get everything you will get at that time only. Okay, so the idea of freedom, it also emerged at that time only. Okay, because the Renaissance has put the man in the center of the thought. Okay, center of universe. At the every thought, the man is at the center. Okay, first thing. So the actually idea of liberty. Okay, idea of liberty has given by many thinkers or many scholars, but most important is J.S. Mill. Okay, J.S. Mill is more important. He wrote a paper, essay on liberty. Okay, within that he has discussed what is actually liberty is. ठीक है, लिबर्टी और फ्रीडम दोनों का मतलब सिनोनिमस है. ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है. ओके, लिबर्टी हम क्या करते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी. विल कम टू दैट. फ्रीडम भी हम उसी तरीके से डिवाइड करते हैं. सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड लिबर्टी और फ्रीडम इन दैट सेंस. देन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट्स. ओके, राइट्स क्या होते हैं और इसका रिलेशन क्या है. ओके, इसका रिलेशन, व्हाट आर द रिलेशंस, ओके, ऑफ बोथ फ्रीडम्स एंड ड्यूटीज का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में
ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के एग्जाम में। ओके, सो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो एक तरीके से लीगल नहीं है, मतलब इट्स नॉट एनफोर्सेबल। ठीक है, अब जैसे कि डीपीएसपी है, डीपीएसपी इज एनफोर्सेबल, सॉरी नॉट एनफोर्सेबल। अब व्हाई इट इज नॉट एनफोर्सेबल, देयर इज अ लिटिल concept understanding on that why it cannot be enforced. Fundamental right is enforceable, so you need to understand what is the meaning of the enforceability. When we talk about enforceable, then what is the meaning of enforceable, why it is enforceable? Okay, fine. So let's start with freedom. Okay, पहले freedom से शुरू करते हैं। freedom का simple meaning है absence of restraint. Now when you talk about the absence of restraint, what is actually mean? Absence of restraint, when we talk about absence of restraint, what does it simply mean by the term itself? Okay, by the term itself means there is an absolute freedom. So do we have, now the question arises, do we have absolute freedom in any context? We do not have any freedom, absolute freedom है नहीं हमारे पास में। एक्सप्लॉयटेशन के केस में यस, कैसे? तो वो तो बेसिकली ठीक है, रिट पिटिशन इज अ यू कैन से वो एक तरीके से लीगल मैकेनिज्म है कि अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो आप जा सकते, अब जाए कहाँ? ठीक है, देयर हैज टू बी सम इंस्टीट्यूशन जहाँ आप जाएंगे। ठीक है, तो वो बेसिकली वो लीगल इंस्टीट्यूशन का मैकेनिज्म है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इन सिंपल सेंस एब्सोल्यूट फ्रीडम कहीं अवेलेबल है या नहीं है? ठीक है, इंडिया में भी नहीं है, अब्रॉड में भी नहीं है एब्सोल्यूट फ्रीडम। फ्रांस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के केस में है, ठीक है, एब्सोल्यूट फ्रीडम है वहाँ पे। अमेरिका में नहीं है। कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग दैट इज यू कैन फाइंड देयर इज एन एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑन दैट? ठीक है, कहीं कुछ दिखता है जहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रीडम हो? आइदर यू से दैट फ्रीडम इज फॉर योर प्रोटेक्शन, or you say that freedom is exercised, should not be exercised by somebody. ठीक है, तो फ्रीडम का मतलब यू टेक इट एज एन इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आप इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में उसे ले लीजिए। यू टॉक अबाउट, व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और यू टॉक अबाउट फ्रीडम, वी ऑलवेज टॉक फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टी। ओके, ये सारी चीजें हम इंडिविजुअल लेवल पे ही बात करते हैं। ठीक है, इवन यू आर नॉट, वी डू नॉट डिस्कस दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर पार्टनर्स ऑल्सो, हस्बैंड वाइफ, इसके कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं होता है, सिर्फ इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट एनीथिंग एल्स। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट absolute, there is absence of restraint, then we talk about, okay fine, there is an absolute freedom. If we talk about absence of restraint, there will be an absolute freedom. Now that is not possible. Okay, that is not possible because there has to be certain limitation. France has an absolute freedom in the context of freedom of speech and expression. That is the reason there is a high rate of violence, terrorist violence in the country. ठीक है, रिलीजियस वायलेंस होने का वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, जबकि वन ऑफ द मोस्ट कंटेस्टेड फंडामेंटल राइट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। Okay, although freedom of speech and expression, okay, is basically one of the primary fundamental rights that is provided to you. ठीक है, ये one of the primary fundamental right है जो आपको मिला था। Okay, now in the case of India there is an absolute freedom against, or in the case of the world there is absolute freedom against one very important thing, slavery. स्लेवरी के केस में आपके पास में एब्सोल्यूट फ्रीडम है कि आई कैन बी एनीथिंग बट यू डू नॉट हैव एनी राइट टू मेक मी योर स्लेव। ओके, स्लेव के केस में आपके पास में एब्सोल्यूट राइट है, ये वर्ल्ड अराउंड है।
Now if we talk about the India specific, then there is untouchability. ठीक है? There is untouchability. In the case of untouchability, you have an absolute freedom. One against you cannot practice untouchability. ठीक है? Untouchability आपके अगेंस्ट में प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता सामने वाला. ठीक है? Getting the point? So in this case, we have an absolute freedom. Now turn. Now if there is no absolute freedom in many of the contexts, then what do we have? We have restraint. Okay? Restriction. Okay? There is certain restriction. अब आपके पास में certain restrictions है. Okay? Now the question arises, ये restriction किस तरीके की होंगी? What? Okay. So we have one principle. Okay? इस restriction का एक principle है. The principle is known as harm principle. We have one principle, it is known as harm principle. ठीक है? Harm principle. कोई confusion है यहाँ पे? You will have to write the things on your own. Okay? Keep writing. Harm principle. Harm principle is actually given by Mill, G.S. Mill. Okay? He has given the idea of harm principle. Now, what is harm principle? Now, while exercising the power, okay, while exercising my power. Now, when you exercise your power, okay, human exercise its power of freedom. Okay? When human exercise the power of freedom, what he will do? What that particular person will do? He will take an action. क्या करेगा? Action ही लेगा. What is action? Action को simple समझो, activity. जिसको confusion है वैसे समझो. Action का मतलब होता है activity. ठीक है? Action का मतलब हमेशा negative नहीं होता, positive भी होता है. Action simply means activity. Okay? अब you take an activity. ठीक है? Now when you take any activity, okay? Now there will be two impact. इस एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट है? दो इम्पैक्ट है. ठीक है? एक तो इम्पैक्ट होगा ऑन योर सेल्फ. ठीक है? एक इम्पैक्ट कहाँ होगा? सेल्फ, खुद के ऊपर. दूसरा इम्पैक्ट होगा ऑन अदर्स. दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा? अदर्स पे होगा. कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है? नाउ this when your action while exercising your freedom, ठीक है, while exercising your freedom, when it has an impact on self, जब वो सेल्फ पे इम्पैक्ट होगा तो उसे हम कहेंगे, उसे कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग. सेल्फ रिगार्डिंग. Question? Self-regarding. Okay? When your action has an impact on others, that is called as others regarding. यहाँ तक कि किसी कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक. It's okay. Right. So your action will have two, self and others. Self regarding and others regarding कहते हैं. ठीक है? तो ये क्या है? आपके पूरे एंटायर एक्टिविटी का क्या है? ये दो जोन है. ठीक है? दिस इज आर द टू जोन्स दैट इज क्रिएटेड बाय योर एक्शन. ये दो जोन बनता है. ओके? एक ये और एक ये. दो जोन हो गया. ये ऐसे लाइन है बीच में. Now understand this.
when you have an absolute freedom on something, okay, your zone of self regarding is maximum. अगर आपके पास में एब्सोल्यूट फ्रीडम है तो जोन ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग क्या है? मैक्सिमम. ये कंसिडरेशन है कि इस पर्टिकुलर एक्शन का पूरा इम्पैक्ट मेरे ऊपर ही आएगा. गेटिंग इट? है ना? कोई कंफ्यूजन है इसमें? वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ योर एक्शन. ठीक है? सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपका एक्शन का इम्पैक्ट कहाँ पे है. तो अगर आपका एब्सोल्यूट फ्रीडम है तो आपका इम्पैक्ट कहाँ है सबसे ज्यादा? सेल्फ पे मैक्सिमम, मतलब 100% सेल्फ पे ही है. ये कंसिडरेशन होता है आपके फ्रीडम का. दैट 100% इम्पैक्ट ऑफ योर absolute freedom is on the self. Now tell me, in that case, the suicide should be legalized. कैसे? हाँ, नहीं तो मैंने अपनी जान ले लिया तो मैंने ले लिया भाई, मेरी जान है, मैंने ले लिया. I've taken it. I'm not taking your life. I'm taking my own life. लाइफ पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है आपकी. तो तुम केयर टेकर हो लाइफ के. स्टेट की लाइफ है पूरी. हाँ, आप लाइफ अपनी मर्जी से नहीं एंड कर सकते. तो आप केयर टेकर हैं लाइफ के. तो लाइफ किसकी प्रॉपर्टी है? सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट, वो तो चोरी का भी होता है. बट इट्स नॉट लाइक चोरी तो ठीक है अलाउड नहीं है, लेकिन तो लिमिटेड पनिशमेंट है. सोसाइटी का पनिशमेंट कहाँ? अटेम्प्ट है, नहीं हो पाया, मतलब इससे अच्छा कि मर जाओ, नहीं तो सजा काटो. नहीं, दे हैव बीन रिमूव, डीक्रिमिनलाइज कर दिया हमने इसको. ये डीक्रिमिनलाइज, मोदी गवर्नमेंट हैज डीक्रिमिनलाइज इट. रिसेंटली गॉट डीक्रिमिनलाइज, उस टाइम पहले ही हुआ. बताओ, तो यू आर अ केयर टेकर ऑफ लाइफ. सोचो थोड़ा, मतलब think this way. If there is a life, you have a life. The government, state does not allow you to kill yourself, ठीक है, at any cost. ठीक है. अभी yesterday in the paper you might have read that a family member, a man killed his family, entire family, and last he has done the suicide. Okay. Now there is a helpline center for who is trying to attempt the suicide. Okay, ठीक है, वो छोड़ दो. They're not concerned about that. They're concerned about the understanding, the psychology or the philosophy behind that. Okay. Now it is your life. You are a sole owner, but the life is not allowed to be taken, okay, by the state. State does not allow you to take your life or anybody's life. Let's stick to our own example. Okay. Now the life you live, you are a caretaker. आप caretaker ही हो गए एक हिसाब से. तो लाइफ की प्रॉपर्टी किसकी हुई? If you are a caretaker, the life is the property of the state. This is the concept of welfare state. ठीक है, ये welfare state का concept. What does the welfare state says that? In the welfare state, everything that are there in the society, it is the state is the owner of that, and the state will look after everything. Still, if you are poor, state will make you, help you to become a rich or better off person. Not rich, but better off person. Okay. So in that case, the zone, absolute freedom का, this is suicide है. So suicide, you cannot take a life. Okay, that should not be there. Now there is a reason.
The society is never same. Society is never same, and society will never be same. ठीक है? Because division in the society is a source of labor in the society. ठीक है? Source of motivation for work in the society. Division होना society में वो एक source of motivation है work का. ठीक है? Otherwise कोई काम नहीं करना चाहेगा. So that is not possible. Okay? You, in certain context, for the practicality, we need certain kind of an inequality in the society. But that inequality should not be rigid. ठीक है? वो rigid नहीं होना चाहिए. Okay? और मिनिमम से बहुत ऊपर होना चाहिए वो इनइक्वालिटी. ओके, जो मिनिमम है हमारा, जैसे कि व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द इंडिया? बीपीएल का 32 रुपीज एंड 26 रुपीज. ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया. इससे बहुत ऊपर होना चाहिए वो इनइक्वालिटी. ओके, ये तो बीपीएल बहुत नीचे हो गया. ओके, नाउ व्हेन यू टेक अ लाइफ, ठीक है, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. हाउ? Might be a people which belong from your same group, income group, psychological group. जैसे स्टूडेंट हो तो साइकोलॉजिकल, फेल हो गए सोसाइटिकल ग्रुप, साइकोलॉजिकल ग्रुप है. ठीक है, ओके. सुशांत सिंह has made a beautiful movie. What is the name of the movie? Sure, based on the suicide attempt, but he himself done a so far the suicide, है ना? Okay, so he had not learned anything, but he's trying to teach us something. Okay, so you will have a same situation. So that is the reason attempting a suicide which will have an impact on the society. How? It will have an impact on the society in the sense that the same people belonging from the same psychological group, belonging from the same economic group, what they will do, they will find this as a solution to their problem. Okay, solution to the problem. So this is the reason society is not absolute so far. It should not be. Okay, society should not be. Okay, one thing. Now when we talk about self-regarding, okay, the impact is maximum absolute term में. ठीक है, and when we talk about यहाँ others regarding, यहाँ पे restriction शुरू होता है. ठीक है, खतरनाक है. हाँ, उसको शुरू से ही क्रिमिनलाइज रखा था हमने, डिक्रिमिनलाइज किया रिसेंटली. ठीक है, ओके, डिक्रिमिनलाइज हमने किया है. ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट कह रहा है कि देखिए जान ले लो अपनी. ठीक है, ऐसा नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट द, देखो, व्हेन वी डिक्रिमिनलाइज इट, वी कंसीडर द सोसाइटी इज बिकमिंग मैच्योर इनफ. सोसाइटी इज बिकमिंग मैच्योर, विल कम टू दैट. मैच्योर इनफ वो वही है एक्चुअली में. ठीक है, विल कम टू दैट. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अदर्स रिगार्डिंग योर impact of your action on the others, okay, here the restrictions come. Now this source of restrictions can be many. Actually there are one सबसे important, बहुत important aspect है जो restriction का source और conflicting का source बनता है. Okay, that is cultural values first of a society. लेकिन which cultural values of a society? It will have a conflict with the traditional cultural society. ट्रेडिशनल कल्चरल सोसाइटी का कॉन्फ्लिक्ट किससे होगा? मॉडर्न, यस, मॉडर्न वैल्यूज से. मॉडर्न का कोई कल्चर नहीं है. ठीक है, मॉडर्न वैल्यूज बन रहा है अभी. आफ्टर 200-500 साल के बाद में कल्चर बनेगा. ठीक है, कल्चर एक लंबी जर्नी होती है किसी भी चीज की. ठीक है, अभी वैल्यूज मॉडर्न, एक्चुअली मॉडर्न वैल्यूज आर एक्चुअली इन especially in the eastern part of the world is actually in immature stage. Western will come to that only. Okay, now this, understand this, there is a difference between the cultural values, traditional cultural values and the modern cultural values. अब ये क्या करेगा? this
नाउ फ्रीडम, व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम इज अ मॉडर्न वैल्यू। फ्रीडम क्या है? मॉडर्न वैल्यू है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन कहाँ से लाएगा फ्रीडम? ट्रेडिशनल कल्चर सोसाइटी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? So Indian society is still open for the women as a equal participants in the society? The answer is no. Don't say yes somewhere. ठीक है, कहीं बोल मत देना प्लीज इंटरव्यू में नो सर, बट ऐसे बोलो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू इंटीग्रेट देम इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। आंसर इज नो, बट ओके, आंसर इज नो। नाउ द क्वेश्चन अराइज, देयर आर मेनी ट्रेडिशनल वैल्यूज से आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, ठीक है, बहुत सारे, एंड स्पेशली इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी, स्पेशली द रेस्ट्रिक्शन विल कम एंड मोस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग विल बी रिलीजन। क्या होगा? मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा रिलीजन, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ओके, मोस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग विल बी रिलीजन, ओके। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिलीजन, यू नो ब्लास्फेमी लॉ, blasphemy law, you know what is blasphemy? Sorry, धोखा? धोखा ब्लास्फेमी? धोखा तो डिसीट होता है, ब्लास्फेमी नहीं होता। धोखे का मतलब डिसीट होता है, ब्लास्फेमी। Blasphemy, okay, the blasphemy is actually what do? You consider when somebody claim as a god, when somebody claims to be a god, ठीक है। तो बहुत सारे रिलीजन में क्या है, द क्लेमिंग टू बी अ गॉड इज नॉट अ ऑप्शन, ठीक है। सो दिस ऑलवेज कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द रिलीजन। नाउ can somebody attain God, attain the godly position? ऐसा नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। यू आर लिमिटिंग द ह्यूमन ट्रांसेंडेंस, ओके, फ्रॉम द मटेरियल टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान में कितने बाबा हैं, मतलब क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है। ब्लास्फेमी लॉ, देयर इज अ रीजन ब्लास्फेमी लॉ इज नॉट इन इंडिया, हो ही नहीं सकता इंडिया के अंदर। देयर इज अ रीजन ब्लास्फेमी लॉ इज देयर इन द मुस्लिम एंड द क्रिश्चियन वर्ल्ड, ठीक है। मुस्लिम कंट्रीज और क्रिश्चियन कंट्रीज में ब्लास्फेमी लॉ है, ठीक है। वन हु क्लेम टू बी अ गॉड, उसको डेथ पनिशमेंट है उसके लिए, ठीक है। हाँ, डेथ पनिशमेंट ही है उसका एक्चुअली, इससे लोअर पनिशमेंट तो है ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं कहीं पर, डेथ पेनल्टी मिनिमम है, ओके। सो इट विल कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द मॉडर्न वैल्यूज। So this is what we call it as a self-regarding and others regarding in the freedom, that is known as harm principle. ये harm principle. Now understand. Actually India is in a position, in a transition position. India ना ही traditional है ना ही modern है, ठीक है। So that is the reason we have a concept in India. We have a concept in India. In India as a country, we have two India. One is a India, another is a Bharat. Okay, हमारे इसीलिए हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक इंडिया है और एक भारत है। What is India and what is भारत? कहाँ पे है? कहाँ मिक्स है? यस, ऐसे बोलो, ऐसे बोलते हैं इसको। The urban India is known as India. The rural India is known as Bharat. Why? The reason is their traditional outlook. Traditional outlook जो उनका है, या भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका traditional outlook है। Indian urban India is called as a India because they have a modern outlook. ठीक है, उनका modern outlook है दोनों का, तो दोनों ही अलग अलग हैं। अभी यहाँ से गांव कितना दूर है? Where you are sitting, 5 किलोमीटर है। तुम्हें भारत देखने को मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। हरियाणा इज वेरी ट्रेडिशनल। कहाँ है आप लोग? सबसे वन ऑफ द वर्स्ट सेक्स रेशियो इन हरियाणा
वन ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड, यू कैन से कंगारू कोट, खाप पंचायत, जीन्स पहनने मना कर दिया, फोर, तुम्हें पता है, यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ अ सोशल इंसिडेंट इज हैपनिंग. The girl who is actually went to urban areas for studies or job, the families are not accepting her as a, not kid, her as a daughter-in-law, wife. This is the new problem that we are facing right now. ठीक है, and especially in North India. ठीक है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया. ये एक और फिनोमिना है, नया एमर्जिंग फिनोमिना. ये कॉन्ट्रास्टेड है. द वुमेन हु हैज टेकन द पब्लिक लाइफ, नॉट पब्लिक बट यू कैन से द ओपन लाइफ, शी इज नॉट बीन एक्सेप्टेड एज अ डॉटर. वैसे जरूरत क्या है? शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमेन, ग्रोन वुमेन, शी कैन अर्न and she can support the husband also. Okay, that is the thing. That is the modern values. Okay, often it comes into the contradiction to both. Okay, now India is in a transition phase. Okay, India क्या है, transition phase पे है. ठीक है, अब समझने की कोशिश करो कि now self regarding and others regarding the action. Now generally what happen in the case when you have a new freedom, you try to do everything. Okay, you try to do everything without a conscious mind. ठीक है, without having a conscious mind, you try to do everything. Now in doing that, you don't take others freedom into regard. सामने भाई तुम्हारा फ्रीडम है तो किसी और का भी तो है ना. others freedom into regard, you don't take it. ठीक है, basically this happen when you have a very new freedom, new experience to the freedom. Okay, but over a time when you mature yourself, when you get mature, what do? You consciously restrict your action. What do? You consciously restrict your action. आप क्या करते हैं? कॉन्शियसली अपने एक्शन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि मैं ये ना करूं, इसका उससे उसका नुकसान है. ठीक है, दिस इज द फिनोमिना व्हाट वी हैव व्हेन वी हैव अ मैच्योर modern values society, or when we have a mature democracy in the country or a society. ठीक है, this is the phenomena of west का ये phenomena, west का ये culture. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, this अगर मैं इसको एक आपके freedom को, what I do, suppose this is a freedom which is like a resizable ball. एक फ्रीडम है जो कि रिसाइजेबल बॉल है. ठीक है, when you are in early stage, what will happen? The zone, over a time you get mature, your zone of self regarding will keep on expanding. क्योंकि क्या होगा, over a time you will become conscious. ठीक है, तो गवर्नमेंट को तुम्हारे पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद तुम अपने आप पे लगा लो ऑन द सेल्फ कंसाइंस. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक्चुअली फ्रीडम का जो एसेंशियल एलिमेंट है ना, और एसेंशियल पर्पस है फ्रीडम का, वो एक्चुअली यही है. ठीक है, देयर शुड बी एन एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट फर्स्ट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंस्ट्रेंट, देयर आर टू कंस्ट्रेंट. ठीक है, कंस्ट्रेंट हमने पढ़ लिया. अब इस कंस्ट्रेंट में दो कंस्ट्रेंट है. ओके, एक तो कंस्ट्रेंट है ये रेस्ट्रेंट है. ओके, एक तो सेल्फ है. ठीक है, और एक क्या है, एक बाय स्टेट, कोई भी. ठीक है, एक तो आपका सेल्फ है और एक आपका अदर्स है. वी कॉल इट एज अ, सेल्फ को हम लोग इंटरनल कहते हैं, this is external. Okay, the more the society will get mature. ठीक है, ये आपका बढ़े जाएगा, एक्सटर्नल कम हो जाएगा. ठीक है, और इंडिया में कहाँ पे हैं हम लोग? इंडिया में अभी हम लोग एक्सटर्नल पे, अभी तो मतलब अभी बहुत हम लोग बहुत नेसेंट स्टेज पर है. ठीक है,
वी आर एक्चुअली वांट टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, गेट इट? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? तो ये क्या होगा, जोन, ये आपका रिसाइजेबल बॉल है, तो ये बढ़ेगा जैसे जैसे सोसाइटी मेच्योर होगी, सेल्फ रिगार्डिंग का आपका जोन बढ़ता रहेगा, ठीक है? आपको जोन बढ़ता रहेगा, अदर्स रिगार्डिंग का जोन और एक्सटर्नल का जोन कम होता रहेगा, ठीक है? सेल्फ का खुद तुम बढ़ा दोगे, यू विल नॉट रिक्वायर एनी स्टेट और समबडी टू इन्फ्लुएंस. बट द फर्स्ट थिंग इज, तो यू माइट आस्क मी, सर, if we are putting a self-respect on ourselves in a mature democracy, ठीक है, in a mature stage, okay, then why we need a freedom? हमें फ्रीडम की जरूरत क्या है? कंस्ट्रेंट हटाना ही फ्रीडम का मेन पर्पस था, तो फ्रीडम की जरूरत क्या है हमें? द आंसर टू दिस इज कि हमें फ्रीडम की इसलिए जरूरत है कि वो कंस्ट्रेंट हमें अपने ऊपर लाना है. उस कंस्ट्रेंट को कंट्रोल किसके पास आना चाहिए? हमारे पास. मुझे स्टेट की जरूरत ना पड़े या कोई और कंस्ट्रेंट ना लेके आए मेरे ऊपर. ओके, वी नीड अ स्टेट. व्हाई? बिकॉज वी नीड अ फंडामेंटल राइट, यू अंडरस्टैंड, ओके, बट वी नीड अ स्टेट ऑल्सो. इफ somebody exercise the excessive freedom that is actually impacting on me, then I need somebody should be an arbitrary institution. Okay? Arbitrary institution, that will be state. ठीक है? कोई कंफ्यूजन है? एक्चुअली ये सब बहुत बेसिक एलिमेंट है, जो भी हॉब्स का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, स्टेट ऑफ नेचर से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है फ्रीडम. ठीक है? ओके, गेटिंग इट? सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली फ्रीडम. कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं है? लैंग्वेज और एथनिसिटी. एथनिसिटी आ सकता है, लैंग्वेज नहीं आ सकता. लैंग्वेज कैन बी अ सोर्स ऑफ डिवीजन. ठीक है, लैंग्वेज कैन बी अ सोर्स ऑफ डिवीजन, बट इट इज नॉट, यू कैन से द सोर्स ऑफ रेस्पेक्ट. एथनिसिटी डेफिनेटली है. ठीक है, एथनिसिटी में कोई डाउट नहीं है, एथनिसिटी है. एथनिसिटी मीन्स व्हाट? रिलीजन, रेस कैन बी एन एथनिसिटी. ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नो कंफ्यूजन, गुड. देन वी हैव लिबर्टी. ठीक है, लिबर्टी है. लिबर्टी मीन्स सिंपल वही है, टू बी फ्री. टू बी फ्री टू डू anything. Okay, now within this liberty we have two things. Positive, negative. ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव. व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी? हम कुछ भी हार्म नहीं करेगा. ओके, ओके, हेल्प करनी चाहिए, वो तो फ्रीडम का काम ही वही है. ठीक है, फ्रीडम का काम मेन वही है, लिबर्टी. हाँ, ओके, हार्म प्रिंसिपल ही होगा. ओके, वेरी गुड, यू ऑल आर रॉन्ग. लिबर्टी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज इन द रिलेशन विद द, ये हम स्टडी करते हैं इन द रिलेशन ऑफ, अभी तक तुम इंडिविजुअल पे थे. ठीक है, अब तुम्हारा रिलेशन किससे होगा? इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एंड स्टेट. ठीक है, we study liberty in the context of this relation between individual and
ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, द डिबेट इज अराउंड, डिबेट जो है इसका डिबेट इज अराउंड हु केम फर्स्ट, हु केम फर्स्ट. Okay, so who came first, individual or state? Prior. Okay, now this is a theory. ठीक है, इसमें सब theory है, अलग अलग लोग अलग अलग बोले हैं. ठीक है, पर in the modern context what we say actually ये individual नहीं है, actually society थी. पहले ये society थी. ठीक है, earlier it was society. Now you tell me which came first, society or state? सोसाइटी एक कैसे हो सकता है? सोसाइटी इंडिविजुअल एक कैसे है? वो तुम्हारी बात सही है कि सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेट, सॉरी स्टेट इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी. सोसाइटी, स्टेट जो है सोसाइटी एक कंपोनेंट है. तो विच केम फर्स्ट, दिस और दिस? So there is a debate. Actually, the entire political science or entire polity is actually based on this three relation. Okay, society, state, and individual. ये तीन का जो रिलेशन है इसी के ऊपर पूरी पॉलिटिकल साइंस डिपेंडेंट है, और इंडियन पॉलिटी फॉर दैट मैटर. ठीक है, गेटिंग इट? नाउ टेल मी इन दिस केस हु केम फर्स्ट, सोसाइटी और स्टेट? So there is a debate. ओके, यही मार्क्स यही कहना चाह रहा है कि मुझे स्टेट नहीं चाहिए क्योंकि सोसाइटी पहले थी. ठीक है, स्टेट को तो बनाया गया है, स्टेट की जरूरत नहीं थी. बहुत सारे थिंकर का क्या कहना है, स्टेट वॉज, सोसाइटी वॉज फर्स्ट, स्टेट केम लेटर. ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? ओके, अब बट हमें सोसाइटी भी, स्टेट भी चाहिए. तो डेवलपमेंट, डैम बनाने का काम कौन करेगा? ठीक है, तो डेवलपमेंट का काम भी उसी का ही है, तो स्टेट भी चाहिए हमें. ओके, तो ये एक तरीके का रिलेशन है तीनों का. गेटिंग पॉइंट? When we study the relation of all the three, we talk about the negative and the positive liberty. Okay, in the modern sense. Why? Because in the modern values, you will have a freedom. You cannot exist without the freedom. आप freedom के बिना exist नहीं कर सकते हैं. ठीक है, you need a freedom for that matter. Now, if you need a freedom, first thing tell me, if you are an individual and you are a society, सो अगर से स्टेट इसका कंपोनेंट है, ठीक है, सोसाइटी का, और इंडिविजुअल भी सोसाइटी का कंपोनेंट है. ठीक है, तो इन तीनों में सबसे पहले कौन है? इंडिविजुअल. सबसे पहले इंडिविजुअल है, तब इंडिविजुअल इज अ कंपोनेंट ना. ठीक, ग्रुपिंग ऑफ पीपल टुगेदर बिकम्स अ सोसाइटी. सोसाइटी में एक पार्ट है स्टेट का, स्टेट एक्चुअली उसका एक पार्ट है. ठीक है, तो हु विल कम प्रायर? इंडिविजुअल आएगा प्रायर. तो अगर इफ यू आर इंडिविजुअल, तो बाय द वर्च्यू ऑफ नेचर यू माइट बी हैविंग सर्टेन राइट्स. कुछ ना कुछ राइट्स तो होंगे तुम्हारे. ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? यू माइट हैव सर्टेन राइट्स बाय बीइंग अ इंडिविजुअल. बाय वर्च्यू ऑफ नेचर द गॉड हैज गिवन यू सर्टेन राइट्स. ठीक है, दैट विल टेक द फॉर्म ऑफ राइट्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, in the terms of constitution, that will be known as. ठीक है, now tell me, this is a fundamental right. Okay, now you see the fundamental right in the constitution. ठीक है, अगर fundamental right तो अपने constitution में देख रहे हो, that is given by the constitution, that is given by the state, that is given by the society. किसने दिया है? Who has given that? सोसाइटी ने दिया है. आंसर इज नो. तुम्हारे पास पहले से था, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है. बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, by virtue of being human, you already have that right.
डोंट, अगर तुम्हें किसी ने कुछ चीज दिया, दैट मीन्स यू डोंट हैव दैट थिंग. Quality knowledge. I'm your teacher. I'm giving you quality knowledge. You already have that knowledge? No. But I am giving you. There is a certain transaction to that. Okay? But this is the knowledge I am giving. So you don't have already. But to process that knowledge, you need a brain, a cognitive mind. That you already have. That is not given by me. I just provided you an information. Okay? मैंने क्या किया? I have provided you the information. Information can be anything, concept, fact, anything. और रिसोर्स बता दिया. But the cognitive mind समझ रहे हो? Active mind और mind which can process. ठीक है? Process the knowledge. Okay? So a cognitive mind you already have. मुझे देने की जरूरत नहीं. By being a virtue of, by being a human, by virtue of nature that you already have. नहीं ले सकता. हाँ, कैसे फंडामेंटल राइट हमेशा ही रहती है. एक्चुअली क्वेश्चन क्या है आपका? वही आ रहा हूँ मैं वहाँ पे. सोसाइटी ने हमें दी नहीं है. हमारे पास एब्सोल्यूट थी. बाय वर्च्यू हमने लिमिट कैसे किया है? रुको, अभी कंफ्यूज मत हो. हमारे पास जब हम पैदा होते हैं, व्हेन बाय बीइंग अ ह्यूमन वी हैव एब्सोल्यूट राइट. ठीक है, उसे हम स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं. डोंट गो इनटू दैट डिबेट. वो हॉब्स की थ्योरी है पूरी की पूरी. ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर है वो छोड़ दो. बाय बीइंग अ ह्यूमन व्हेन नोबडी इज देयर यू हैव एन एब्सोल्यूट राइट. ठीक है, पर तुम एब्सोल्यूट राइट में फंक्शन नहीं कर सकते हो. एब्सोल्यूट राइट में तुम फंक्शन नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि यू हैव एन एब्सोल्यूट राइट, somebody also have an absolute right. So you have an absolute right to kill somebody. Somebody has absolute right to kill you. तो बचा कौन? The net is zero. Net is zero. So what do we do? By virtue of being a human, I have an absolute right. ठीक है? But ठीक है, for the convenience or the existence, for our own existence, ठीक है, हमारे खुद के एग्जिस्टेंस के लिए, फॉर अ मोर इंटरेक्शन विद द अदर्स, व्हाट वी डू? वी कॉम्प्रोमाइज. वी कॉम्प्रोमाइज एंड वी लिमिट आवर दिस राइट. वी लिमिट आवर राइट्स. दैट पर्टिकुलर राइट दैट इज बीइंग लिमिटेड is being recognized by the society. So society should need certain document to run itself. अब सोसाइटी तो वेगली तो रन नहीं कर सकती है. हमेशा से सोसाइटी डॉक्यूमेंट के साथ ही रन करी है. ठीक है, ये टेक अ सोसाइटी, यू टेक अ प्रिमिटिव सोसाइटी. तो उनके अपने कल्चर थे. ऋग्वेदिक सोसाइटी, वैदिक सोसाइटी चली है पूरी, वेद से चल रहे थे पूरा. ठीक है, इस्लामिक सोसाइटी इस्लाम के हिसाब से, शरिया कानून एंड एवरीथिंग उनके हिसाब. बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में सोसाइटी है. ठीक है, यू नो पिटाकास एंड ऑल, शुद्ध पिटाकास एंड दैट, तो उनका अपना है. ठीक है, तो देयर हैज टू बी सर्टेन डॉक्यूमेंट which will be agreed by the entire community of that society or the entire society by itself. ठीक है, that will be run. But modern society में religion का significance कितना होता है? जीरो किया हमने क्या किया? जीरो किया. रिलीजन का सिग्निफिकेंस पब्लिक लाइफ के लिए जीरो किया. ठीक है, पब्लिक लाइफ के लिए हमने जीरो कर दिया उसे. क्योंकि द मोमेंट टू इंडिविजुअल फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली इंटरैक्ट, इवन फ्रॉम द विद इन द फैमिली इंटरैक्ट, ठीक है, दैट बिकम्स द पब्लिक. वो एक पब्लिक लाइफ बन जाएगी. ठीक है, यू मोमेंट यू स्टेप आउट फ्रॉम योर हाउस, यू एंटर समबडीज हाउस. तो तुम अपने घर से एंटर होकर के कहाँ जाते हो? अपने घर से निकल करके कहाँ जाओगे? किसी और के प्रॉपर्टी पे जाओगे या तो फिर स्टेट की प्रॉपर्टी पे जाओगे, है ना. रोड क्या है? स्टेट की प्रॉपर्टी है.
स्टेट की प्रॉपर्टी इज हुज प्रॉपर्टी? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरीबडी, जो भी उसके सिटीजन्स है, ठीक है, सबकी प्रॉपर्टी है। अब सबकी प्रॉपर्टी पे किसी एक का रूल तो नहीं चल सकता, तो देयर हैज टू बी सर्टेन कोडिफिकेशन ऑफ रूल्स, कोई डॉक्यूमेंट हो जिसके हिसाब से हम चले। तो व्हाट इज दैट डॉक्यूमेंट? दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? नाउ विद इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट हैपेंस, वी हैव एन एब्सोल्यूट राइट प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रायर टू फॉर्मिंग अ सोसाइटी, पहले, प्रायर टू सोसाइटी के पहले और सोसाइटी बनने के बाद में। अब सोसाइटी को रन करना है मॉडर्न सोसाइटी में, तो वी ऑलरेडी हैव अ एब्सोल्यूट फ्रीडम, है ना, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम में हम फंक्शन नहीं कर सकते। तो व्हाट वी डू, वी कैटेगराइज सर्टेन राइट एज अ फंडामेंटल राइट्स। हम क्या करेंगे, कुछ राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स बना देंगे कि किसी भी कंडीशन में हम इस फंडामेंटल राइट को नहीं छोड़ेंगे। आपको जो करना है इन द सोसाइटी करो, पर ये फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी ब्रीच्ड। यू गेटिंग इट? सोसाइटी डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम एनी लॉ procedure whatever you want to frame, state do whatever you want to do, we will not compromise. As an individual, not a society, as an individual I will not compromise on this, that is my fundamental right. Getting it? कोई confusion है? नहीं है, मतलब in any case this is not allowed to infringe. Okay, this is known as नेगेटिव राइट। अभी समझ में आया कि किसी भी कंडीशन में आपका फंडामेंटल राइट जो है वायलेट नहीं होना चाहिए। स्टेट आर नॉट अलाउड टू इंटरवीन और टेक अवे दैट फंडामेंटल राइट। तो वो क्या हो गया, वो स्टेट के लिए नेगेटिव हो गया। मतलब स्टेट का एक्शन कैसे हुआ, लिमिट हो गया। स्टेट एक्शंस गेट limited. What is the most important function of the state? एक सबसे important function state का क्या है? To make a law. गवर्नमेंट का सबसे important function क्या है? To make a law. Government can make a law, but not, that is negative liberty. इसे क्या कहते हैं हम लोग? नेगेटिव राइट्स। हाँ, नेगेटिव राइट्स भी कहते हैं। Yeah, tell me. नहीं, you're right. Tell me. Don't worry. देखो, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एक्चुअली में यू एट द अर्लीस्ट डिस्कोर्स ऑफ राइट्स, तुम्हारे पास 3 राइट थे इनिशियल लेवल पे। जब राइट्स की बात शुरू हुई, फ्रीडम की बात शुरू हुई इन 15-16 सेंचुरी में, तो यू हैव ओनली 3 राइट्स। दैट इज अ नेचुरल राइट्स, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये 3 राइट तुम्हारी सबसे प्रोमिनेंट थी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में it 3 the natural right that we are talking about. Okay, these 3 right में right to property is actually a liberal principle first. Second, it is a capitalist principle. ठीक है, what you are telling, India has incorporated in our constitution, we have incorporated in our constitution fundamental rights, right to property under the article 19. ठीक है, so we have accepted the liberal principle or the capitalist principle, but we as an initial level, initially हम क्या थे, सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट पॉलिसी या सोशलिस्ट गवर्नमेंट में हम क्या नहीं कर सकते, यू कैनॉट ओन अ प्रॉपर्टी। मतलब सोशलिज्म में प्रॉपर्टी ओनरशिप है नहीं। गोलकनाथ का केस यही था,
ठीक है, वो राइट प्रॉपर्टी का तुमने सही कहा, प्रॉपर्टी का इशू था वहाँ पे, गवर्नमेंट इज टेकिंग द प्रॉपर्टी बट इट इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो उसमें अमेंडमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो अमेंड नहीं हुआ। पर वो एक्चुअली में वो था लैंड रिफॉर्म का प्रॉब्लम, हम लैंड रिफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे। तो लैंड रिफॉर्म में क्या हो रहा था, प्रॉपर्टी वॉज गेटिंग अवे। ठीक है, तो इसी के लिए हमने 9th शेड्यूल बनाया, और ये क्या कि 9th शेड्यूल में वट एवर इज देयर इन द 9th शेड्यूल उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं है। ठीक है, तो गोलकनाथ की प्रॉपर्टी ऐसे गई। ठीक है, जब उसने गवर्नमेंट ने कहा कि यू कैन नॉट टेक इट, द गवर्नमेंट हैज कोर्ट सेड यू कैन नॉट टेक द प्रॉपर्टी बिकॉज यू डोंट हैव अ राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, व्हाट ही हैज डन आफ्टर दैट, द गवर्नमेंट हैज पुट द एंटायर लॉ, लैंड रिफॉर्म का सारा लॉ 9th शेड्यूल में डाल दिया, रिव्यू से बच गया। ओके, सो दिस इज, अभी नेगेटिव लिबर्टी समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है? वेरी गुड। ओके, नाउ पॉजिटिव लिबर्टी, इफ द स्टेट कैन इंटरवीन, okay, state can intervene some places. Okay, basically positive liberty जो है वो बेसिकली सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है। इफ द स्टेट विल इंटरवीन, ठीक है, स्टेट अगर इंटरवीन करेगा तो पर्पस क्या है स्टेट का इंटरवीन करने का? वाई, क्यों करना चाह रहा है वेलफेयर? व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ डूइंग द वेलफेयर? द मेन एलिमेंट ऑफ डूइंग अ वेलफेयर, इक्वली है, इक्वालिटी लेके आना है। To bring the equality in the society. When the state intervenes in the rights, okay, state intervenes in your fundamental rights, that is known as positive liberty. पहली बार है, it is a relationship between the state and the individual. जब स्टेट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पॉजिटिव में we try to shed away certain rights, liberty. भाई अगर आप स्टेट को अलाउ करते हैं किसी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? you allow the state to intervene in your fundamental rights, but there is certain zone that you will not allow. ठीक है, वो जोन क्या है? उस जोन में तुम अलाउ ही नहीं करोगे स्टेट को कभी, फंडामेंटल राइट, दैट इज द नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी इज दिस। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं? सो पॉजिटिव लिबर्टी अंडरस्टूड, नेगेटिव लिबर्टी नाउ। So this is what we know about positive liberty and negative liberty. So Constitution does not provide such fundamental rights to the individual. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट प्रोवाइड नहीं करता, और हाँ मेक श्योर करता है, मतलब इट रिकॉग्नाइज्ड, व्हाट इट डज, इट ओनली रिकॉग्नाइज कि भाई ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसकी एनफोर्सिबिलिटी कैसी है? ये ऑटोमेटिक है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, दैट इज द फिनोमिना ऑफ, अगर जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेबल है। ठीक है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एनीथिंग। ओके, द स्टेट हैज अ लिमिटेड पावर ऑन दैट, लिमिटेड पावर है ना, स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है उस केस में। तो पावर ज्यादा किसके पास में है? इंडिविजुअल के पास में है। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल एंटिटी के पास में ज्यादा पावर है। तो दैट प्रिंसिपल इज नोन एज व्हाट, व्हेन यू हैव अ लिमिटेड पावर, व्हेन द गवर्नमेंट इज लिमिटेड और देयर इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। याद आया कुछ? थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म याद आया?
तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्रेशन कहाँ मिलता है? फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन? तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट्स में मिलेगा तुम्हें। ओके, नाउ duties. Originally in the constitution there was a duty in which article? Originally no, 51A, आर्टिकल 51A में डाला गया 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, इंस्पायर्ड बाय सोवियत यूनियन। विल डू दैट, ऐसे जरूरत नहीं है उसे करने की, ओके, क्योंकि खाली पढ़ना ही है ड्यूटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पे उसको बनाया गया है। ओके फाइन, important is not that, important is what is duty and what is its relation with the freedom in the Indian context and the world। पर अगर क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में तो वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट नहीं पूछेगा। ठीक है, ओके, व्हाट इज ड्यूटीज? ड्यूटीज मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी और स्टेट, सोसाइटी और स्टेट। अगर स्टेट के तरफ है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या है? When you have a responsibility towards state, what kind of a responsibility you have? Pay your taxes, that is a responsibility. You obey traffic rules, obey the laws, ठीक है, any laws for that matter. Society, कम्युनल हार्मनी बना के रखो, जैसा मत बोलो, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है, इन जनरल होता है, इन जनरल होता है, एजुकेटेड लोग करते हैं, बट इंडिया में जितनी भी एक्टिविटी गलत चीजें होती हैं सोशल लेवल पे नहीं होती है, वो बेसिकली पॉलिटिकल एजेंडा है उसका। रिलीजन इज द मोस्ट यूज्ड एलिमेंट इन द पॉलिटिक्स, नॉट इवन इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड। सोवियत यूनियन के बाद, कोलैप्स होने के बाद में कोई और काम बचा नहीं था पॉलिटिक्स के पास में। ठीक है, व्हेन द यूएसएसआर गॉट कोलैप्स्ड देयर वाज नो आइडियोलॉजी लेफ्ट, द पॉलिटिक्स शुड बी डिबेट ऑन। ठीक है, क्योंकि मालूम था कि कैपिटलिज्म जीत गया, तो दे स्टार्टेड अ न्यू फिनोमेना। व्हाट इज दैट न्यू फिनोमेना? रिलीजन एंड एथनिसिटी, ये दो चीज बढ़ी हैं उसके बाद में। In the course of 30 years, we have seen the increase in the name of the violence, increase in violence in the name of ethnicity and religion. Far right group है पूरे वर्ल्ड में अभी। ठीक है, आगे IR में पढ़ना उसे। Responsibility towards the society and towards the state. Now, according to Gandhi, ठीक है, according to Gandhi, you should not get a right. गांधी के हिसाब से तुम्हें फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए। ओके, गांधी के लिए ड्यूटी इंपॉर्टेंट है। गांधी सेज दैट द वन हु फुलफिल द ड्यूटी should be given the freedom. The who will fulfill the duty? A conscious mind or some unconscious mind? Yes. So he is more into having a conscious mind. Okay. So what he says that the one who fulfill the duty should be getting the rights. It will sound very, practical. And when you exercise your freedom, mostly you are considered subconscious mind में ही काम करते हैं ज़्यादातर, लेकिन freedom is necessary. Ambedkar, okay, Ambedkar says that you should get freedom irrespective of duties. Okay, irrespective of having a duties. Okay, in the context of India, okay, at the time of independence, there was no correlation. Okay, no correlation
between rights and duties at the time of independence. ठीक है? At the time of independence, there was no correlation between the rights and the duties. Huh? Then what happened after this 51 Amendment Act, 42 Amendment Act? We got the fundamental duties का code हुआ हमारे पास में. We got the fundamental duties. So now what happened? We have a correlation with the fundamental rights and the duties. The answer is no. अभी भी नहीं है हमारे पास में. Okay, duty is not compulsory because it is not enforceable. What do you mean by enforceable? लीगली उसे चैलेंज कर सको. चैलेंज मतलब तो ऐसे हर लॉ लीगली चैलेंज कर सकते हो. हर लॉ लीगली चैलेंज कर सकते हो. इसमें एनफोर्सिबिलिटी कहां से आ गई? You can challenge any law. Where is the enforceability in that? फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ठीक है, अभी मिनरल्स माइंस का एक्ट बनाया है. You can challenge that act. Where is the enforceability? You know the word enforceability का मतलब? Enforceability means it does not require a law to be enforced in the society. उसे लॉ की जरूरत नहीं है कि वो एनफोर्स हो, वो अपने आप में एनफोर्स्ड है. फंडामेंटल राइट क्या है? उसे लॉ की जरूरत नहीं है. इट इज एनफोर्स्ड बाय इटसेल्फ. ठीक है. ड्यूटीज तुम्हारी मर्जी है, कर लो. हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए. तो व्हाट यू नीड अ रेजिमेंटेड सोसाइटी. यू नो रेजिमेंटेड सोसाइटी. रेजिमेंटेड सोसाइटी मीन्स you have more of a regimented में समझते हो? Anybody is there from your family in the army or not? नहीं है, कोई बात नहीं. Regimented society का मतलब होता है you are always on the position of receiving the orders. ठीक है, रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो करो. ठीक है, वही तुम्हारा काम है. तो more of a duty will leads to what? Leads to regimented society. Religion is actually a document of not of freedom. It is a document of duties. कोई भी religion, irrespective of the religion, type of religion, whatever it is, any sect within the religion itself, it is what? It is a document of duties, not the document of freedom. Fundamental right तो बहुत दूर है. पहले फ्रीडम ले लो. ठीक है, समझ में आया? इसी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम. नाउ व्हाट हैपन इन दिस केस? मोस्ट ऑफ द टाइम द रिलीजन ब्रिंग्स द स्ट्रैटिफिकेशन इन द सोसाइटी. रिलीजन क्या करता है? स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी में बनाता है. ठीक है, आइदर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, बट इट डज, इट क्रिएट अ डिवीजन इन द सोसाइटी. नाउ is it not the case that so actually duties is a philosophy of in the political level? Okay, philosophy in the political level. ऐसे समझने की कोशिश करो. It is you have a two philosophy at the political level. Political level पर दो ही philosophy आती है. Either you are a socialism और capitalism. Economic perspective, या तो liberal हो या तो social हो. ठीक है. Okay, liberal हो या कम्युनिस्ट हो. Okay, कम्युनिस्ट इज पॉलिटिकल फिलोसफी. ओके, सोशलिस्ट और कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल फिलोसफी है. कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इज इकोनॉमिक प्रिंसिपल. ओके, इन दैट केस ऑफ लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक फिलोसफी, बट बोथ आर सेम. ठीक है. नाउ आइदर यू विल हैव अ लिबरलिज्म और यू विल हैव अ यू कैन से कम्युनिज्म. तो now this focus on liberalism, focus on freedom. इसके लिए फ्रीडम पहले. ठीक है, लिबरलिज्म के लिए फ्रीडम पहले, कम्युनिज्म के लिए ड्यूटीज पहले है. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू एवरी रिलीजन और रिलीजियस डॉक्यूमेंट, इट इज मोर ऑफ अ
रिलीजन भी मोस्ट ऑफ द ड्यूटी, इसी के लिए गांधी ड्यूटीज, गांधी वॉज रिलीजियस, ओके, अंबेडकर वॉज अगेंस्ट रिलीजन। इसके लिए रिलीजन क्या है लिबरल के लिए, इसके लिए रिलीजन का इंपॉर्टेंस कितना है? जीरो नहीं है। इसके लिए रिलीजन एक्चुअली जीरो नहीं है, इसके लिए रिलीजन इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए रिलीजन इंस्ट्रूमेंट है टू गेन पावर, ठीक है। इसके लिए कुछ भी नहीं देखा जाता, ये एथिस्ट है, नॉट एथिस्ट बट इट यूज रिलीजन फॉर इट्स ओन बेनिफिट, ठीक है। रिलीजन अपने बाबा रामदेव रिलीजन को इस्तेमाल करे, टाइकून बन गए, बिजनेस, कहाँ हैं आप लोग? There was one interview has been in one interview. I was very amazed to see that interview. One person was there. He practiced religion and everything. Okay. So what he says that he is BTech, IIT BTech, okay, engineer, worked in US, came to India, become sadhu. Okay. So what happened when he got interviews? So one in that interview or in the speech, he says that when you are working in India, being an engineer, you have a maximum salary of 30 lakh. You went to America, you have now, and as an engineer, you have a 10 crore salary, yearly, annual income. Okay. Being sadhu, my net worth is 100 crore. So choose your profession very wisely. क्या बनना चाहते लाइफ में, बहुत सोच समझ के करो। ओके, सो दे यूज रिलीजन, ठीक है। रिलीजन बोल बोल के उन्होंने पूरा देशभक्ति का सामान बेच दिया। नाउ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यू नो, इसकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी, पता है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो इजीली कंज्यूम होता है, ठीक है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है ना, चावल वाल की दुकान होती है ना, उसे कहते हैं, ठीक है। सो ओके, तो रिलीजन इसके लिए इंस्ट्रूमेंट हुआ। इसके लिए रिलीजन क्या हुआ? ड्यूटीज है, ड्यूटीज सारे रिलीजियस है, लेकिन इसके लिए रिलीजन क्या है? कम्युनिज्म के लिए, कम्युनिज्म के लिए रिलीजन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। कम्युनिज्म के लिए रिलीजन क्या है? रिलीजन इज अ सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। सो फॉर कम्युनिस्ट व्हाट यू आर एथिस्ट। Communism does not recognize religion. It recognizes duties without religion. That is the best part. ठीक है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज क्या है? कुछ भी करो, इक्वालिटी लेके आओ सोसाइटी के अंदर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज क्या है? इक्वालिटी, टू ब्रिंग द इक्वालिटी। Now every duties in the socialist will be coincide or the ultimate goal will be the equality in the society, ठीक है। कोई confusion नहीं है? Okay, got it. So in the case of India, there is no correlation because the fundamental duties is not enforceable. Enforceable कब होता है पता है? When you go for the enforceability, when your rights, you seem that your rights is getting infringed or your rights is getting violated, then what do? You go to the court to enforce that right. Okay, my right is getting violated, please ensure it that it is being implemented, ठीक है। enforceability का मतलब ये होता है। कोई confusion है अभी? नहीं है? Good. So we have seen all the three relations duties में। ये जैसे कि चाइना है, कम्युनिस्ट कंट्री है, रशिया है, अभी भी थोड़ी कम्युनिस्ट है, वहां पे ड्यूटीज ज्यादा, चाइना में ड्यूटी ज्यादा एम्फोसाइज्ड है, ठीक है। यू ऑल यू हैव इज अ ड्यूटी, यू डोंट हैव अ फ्रीडम। आपके पास सारी चीजें क्या है? ड्यूटी ड्यूटी है, फ्रीडम विडम कुछ नहीं है आपके पास। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव। नाउ लेट्स स्टार्ट फंडामेंटल राइट्स। अभी कोई कंफ्यूजन फंडामेंटल राइट को समझने में? फंडामेंटल राइट्स, ओके, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 है, लेकिन तुम्हारे लिए 32, ठीक है। 32 इंपॉर्टेंट, ओके।
What does Article 12 says? Article 12 defines state. It defines state. What does state comprises of? ठीक है, पढ़ो आर्टिकल 12 है, पढ़ा है तुम्हारे पास? Definition of state, read in, not in this, read the actual text. है किसी के पास? बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट खरीद लो, एक बेयर एक्ट खरीद लो। कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट होता है, बेयर एक्ट। फादर लॉयर है तो बेयर एक्ट होगा। कहाँ से? LC 1 2 2 नहीं हुआ। When I was there, I was 52. पर लिया नहीं था मैंने। I have not taken the admission. So I was writing mains. Rank 1 UPSC वाले होते हैं, टॉप 100 वहीं रहते हैं। We were looking for the, हम लोग लेते क्यों हैं? हॉस्टल के लिए, हॉस्टल टॉप 100 तक हॉस्टल मिलता है, तो हम लोग हॉस्टल के लिए लेते हैं। खाली CLC में एडमिशन हॉस्टल के लिए लेते हैं हम लोग, बाकी कोई रीज़न नहीं होता हमारे पास में लेने में, फिर हमको मालूम है वो कुछ नहीं पढ़ाएगा, उससे ज़्यादा हम ही पढ़ा देंगे। इट्स ओके, डू दैट, बट हाँ एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम। जनरली हम लोग को बहुत कॉलेज घूमने, दिस ईयर आई गिव, फॉर्म इज आउट, आएगा ना दिस ईयर आई गिव, क्योंकि थोड़ा अभी कॉलेज जाना है आगे। चलो गेट बैक टू इट, फॉर स्टेट। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत आई फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, लिबर्टीज समझने में? अभी तक इतना क्लियर हुआ? कुछ हुआ 10%, 5%, तो काफ़ी कुछ होगा। अभी समझ में आया फंडामेंटल राइट क्यों है, किस लिए है? ठीक है, चलो ओके। टेक्स्ट पढ़ो, ओरिजिनल टेक्स्ट। नहीं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें आर्टिकल 12 ओपन करो ना डायरेक्टली। You should read the text, original text. Lakshmi नाम का text है, original text. Okay, that is important. Article 12. Article 12 defines state. Now, what does the state comprises? State comprises, can you define state in 2 terms? ठीक है, स्टेट को हम 2 टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस, लॉ के पर्पस के लिए। पहला तो स्टेट का एक्शन, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और उसका एक्शन कैसा है, ठीक है, और दूसरा, और एक्शन और एक्टिविटी कैसी है उसकी, और दूसरा इन द टर्म्स ऑफ द फंड, ठीक है, ओके, गेटिंग इट? इफ एनी इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, ओके, कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो एजुकेशनल हो या कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशन हो, ओके, आइदर इन अ बिजनेस और एनीथिंग, if that institution is receiving a fund from the state government, that will be considered as a state, ठीक है, उसको स्टेट कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक तो ये। दूसरा उसका एक्शन, if that particular state has a larger action having a larger impact on society, larger impact है सोसाइटी पे, ठीक है। एक तो डायरेक्टली फंडेड है, तो फंड 2 तरीके के होते हैं, यू गिव अ फंड इन 2 वेज। एक होती है एडेड इंस्टीट्यूशन,
एक एडेड होती है, एक अनएडेड होती है, ठीक है। एडेड मतलब it is funded by government. When it is funded by government, it also regulated by government, ठीक है, it is regulated by government. Unaided में it is unaided, it is not funded by state but it is regulated by state. Funded नहीं है स्टेट से, स्टेट फंड नहीं करता, लेकिन स्टेट रेगुलेट करता है। जनरली उसको स्टेट कंसिडर करते हैं हम लोग, ओके फाइन। स्टेट का मतलब सिर्फ क्या, लेजिस्लेटिव ऑर्गन नहीं है, बहुत सारे चीजें, सारी अथॉरिटीज, ठीक है। बहुत सारे जो ये होते हैं, व्हाट वी कॉल इट, ट्रस्ट, यू नो ट्रस्ट, तो बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट फंड नहीं करता पर उसको रेगुलेट करता है। जैसे कि यू माइट बी अवेयर अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसे फंड नहीं करता गवर्नमेंट, लेकिन उसे कंट्रोल गवर्नमेंट करता है। कैसे? कॉर्पोरेट सोसाइटीज के अपने इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, ओवरऑल उनको बोर्ड बनाने के लिए इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वहां पे, इट इज रेगुलेटेड, ऑब्वियसली इट इज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। मोस्टली अगर वो रेगुलेट गवर्नमेंट कर रहा है, एक्सेसिव रेगुलेशन उसका इंटरफेरेंस है, उसके मेंबर्स हैं वहां पे, ठीक है, तो वो हो गए, ठीक है। उसी तरीके से बाकी तुम कोऑपरेटिव प्राइवेट भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। प्राइवेट, हाँ, ट्रस्ट प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट ट्रस्ट भी होते हैं, हाँ। तो वो मोस्टली हम क्या करते हैं, उसे स्टेट कंसिडर करते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी इंस्टीट्यूशन जो लार्जर इम्पैक्ट करती है तो उसे भी हम स्टेट कंसिडर करते हैं। प्राइवेट में भी हो तो भी चलेगा, पर लार्जर, जनरली प्राइवेट हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, अपने बेनिफिट तो करेगा तो वो उस केस में। लेकिन हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, जैसे डिस्क्रिमिनेशन है, अब डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन यू कैन से सेक्स, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, तो उस केस में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इन्फोर्सिबल है, that particular institution should be brought to court, although the definition of state is very vague, ठीक है, ऐसा समझो कि वेग है पर है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। गेटिंग इट? कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी? ओके। सो आर्टिकल 12 टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13, लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट, law inconsistent with fundamental rights, with fundamental rights are ठीक है, are void. Law inconsistent with the fundamental right are what? Fine. Okay, what does it mean? Which law? First, any law, ठीक है, any law, any form of law, ठीक है, rules, orders, anything which is made by the government. Now, any law before independence or before constitution and after constitution, okay, after coming of constitution, तो दोनों ही केस में, दोनों ही केस में वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सोसाइटीज, हाँ, दो, हाँ, ठीक है, तो वो तो वैसे भी इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, ठीक है, वो वैसे ही इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। आई विल कम टू दैट। ओके, फंडामेंटल राइट्स, ओके,
fundamental right that you have the fundamental right against whom? Against state. But you have a fundamental right against society also, against different individual also. ये बताया था ना, रिलेशन वही रिलेशन है. तो फंडामेंटल राइट इज एन, क्या है वो? बेसिकली आपका ओवरऑल इंडिविजुअल है वो, ठीक है. और फंडामेंटल राइट क्या है बेसिकली? फंडामेंटल राइट इज इन इंडिया इज अ पॉलिटिकल राइट्स और एंड सिविक राइट्स. ये क्या है? पॉलिटिकल और सिविक राइट है, ठीक है. डीपीएसपी इज योर इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स. ये पॉलिटिकल और सिविक राइट है आपका फंडामेंटल राइट्स. ओके, जनरली ऐसे कैटेगराइजेशन हम करते हैं इसको. फाइन. एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द स्टेट, विद द फंडामेंटल राइट्स विल बी वॉइड. नाउ कोई भी लॉ हो, चाहे आफ्टर चाहे बिफोर, ठीक है. अब इसकी एनफोर्सेबिलिटी हैज टू बी एंश्योर्ड. अपने आप में इसकी एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी, okay? इसकी एनफोर्सेबिलिटी आपको इंश्योर करानी पड़ेगी. ओके, नाउ वेरी रिसेंटली व्हाट हैपेंड, देयर वाज एनी जजमेंट रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय एनी, बहुत पुराने लॉ पे 377 पे कुछ चल रहा है, सेक्शन 377 आईपीसी सीआरपीसी related to homosexuality is a crime, ठीक है. लीगलाइज किया इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. ओके, देयर इज वन मोर थिंग that is there in the case of divorce. In the case of divorce, okay, there was inequality between the man and the woman. Recently, the Supreme Court has amended that. Now, who actually ensure this? The rights are inconsistent? Judiciary, because the judiciary is the protector of not fundamental rights. He is the protector of fundamental rights. Overall guardian कौन है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं, no. Overall guardian is president. The entire constitution. ओवरऑल गार्जियन जो है वो प्रेसिडेंट है एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन का. कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर इज सुप्रीम कोर्ट एंड फाइनल इंटरप्रिटेटर आउटसाइड द पार्लियामेंट. फाइनल इंटरप्रिटेटर आउटसाइड द पार्लियामेंट इज सुप्रीम कोर्ट. ओके, दैट इज द रीजन हाउ वी कैन से दैट द फंडामेंटल राइट इज इंश्योर्ड बाय आर्टिकल 32. सुप्रीम कोर्ट विल इंश्योर द फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 32 की वजह से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ओके, सो एनी लॉ, सो देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन, ओके, बिटवीन द मैन एंड द मेल एंड द फीमेल in the terms of divorce, okay, are related to what was the relation? There was a relation of adultery. हाँ, डिक्रिमिनलाइज. क्यों? क्योंकि अगर वुमेन कर रही है तो डिवोर्स का एक ग्राउंड बनाते हैं उसको, ठीक है. मैन कर रहा है तो वुमेन नहीं बना सकती है, तो दैट वाज इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी थी वो, तो उसे डिक्रिमिनलाइज किया गया. नाउ इट गिव्स द राइट टू द वुमेन ऑल्सो, ठीक है, कि आइदर यू ओवरलुक इट और यू कैन यूज इट एज अ डाइवोर्स, ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, ठीक है. तो ये सेक्शन कब का बना हुआ है? इट इज अ आईपीसी का सेक्शन, 18th century का. The law which was made prior to the independence of India, making of the constitution, that has been decommissioned. Now that does not get any law, it does not get void automatically. Automatically void नहीं होगा जब तक कि उसे आप कोर्ट की प्रोसीजर में नहीं लाएंगे. You have to bring to the court and make the court aware that such practices, such law is there which is against the fundamental. The court will examine its validity and the court will address it accordingly. Now, Article 13. Article 13 is a very important source. Okay. Now there is a law. The law is getting violated. Law is violating your fundamental right.
Judiciary is a final interpreter and protector your fundamental rights. But judiciary should have this power, or judiciary has this power under the Article 13 also and under the Article 32 also. Okay? दोनों ही केस में, यहाँ पे भी इसके पास में पावर है, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है जो तुम्हारा लॉ देखेगी, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए देखेगी, जुडिशरी है. ठीक है. ओके, सो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, जुडिशियल रिव्यू का. जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यहां से आएगा. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट के पास में 13 और 32 से आता है, हाई कोर्ट के पास में 226 से आता है. ठीक. जुडिशियल रिव्यू. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है. ओके, नाउ जुडिशियल रिव्यू. लेट्स टॉक अबाउट जुडिशियल रिव्यू. What is judicial review? Judicial review means simply the power to review the law, okay, किसी कॉन्टेक्स्ट में, review the law in the context of fundamental right. ठीक है. Power to review. What do you mean by review? It will, review का मतलब है it will examine its validity, not purpose. Okay, validity. Okay, validity, but there is a clause within that. Okay, Article 35 में 35, 34, 33, 33 and 34. Validity of the law. Okay, it will examine the validity of the law. Validity in what context? उसके टेन्योर पे, उसके ड्यूरेशन पे, फिर वेरी गुड. तो फंडामेंटल राइट इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं, बस वो ये देख रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं कर रहा है. और अगर कर रहा है, if it is doing that, okay, fundamental rights is doing such thing, then what will happen? If it is doing or violating the fundamental rights, violated, ठीक है. If it is getting violated, now violation of fundamental right is there. Now violation should have two impacts. ठीक है. फंडामेंटल राइट का वायलेशन का दो इम्पैक्ट है. एक तो इंडिविजुअल पे है, इंडिविजुअल का लॉस है, लॉस है नहीं है, और सोसाइटी का गेन होगा. जब इंडिविजुअल का लॉस होता है तो ही सोसाइटी का गेन होता है. कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा? हाँ, एक की छीनेगी जरूरी नहीं होता. फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल है, जरूरी नहीं है ना. रिजर्वेशन है. ठीक है. रिजर्वेशन क्या है? अगेंस्ट इक्वालिटी. पर सोसाइटी के लिए नुकसान है? नहीं. क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं किसके लिए? सोसाइटल गुड के लिए. ठीक है. ऐसे समझो, सोसाइटल गुड के लिए
ज्यादा लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, थोड़े लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कुछ भी लोग कॉम्प्रोमाइज। तो इंडिविजुअल्स आर ट्राइंग टू कॉम्प्रोमाइज, individuals are trying to compromise for societal good. If there is a loss for individual, there will be a gain for society. लेकिन gain society का होना चाहिए. Okay? If there is a violation, okay, understand this. If there is a violation of fundamental rights, it will be a gain to society. ठीक है? लेकिन अगर ये वायलेशन इज अ गेन टू स्टेट, गेन टू, देन इट इज गेट, तभी नलिफाई करते हैं। अनलेस किसके मैटर में, सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट या नेशनल इंटरेस्ट के मामले में छोड़ के किसी भी रीजन से अगर स्टेट ने किया तो वो क्या होगा, दैट विल बी नलिफाइड। एग्जाम्पल, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, ठीक है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट में क्या हुआ, बहुत रोल आ रहा था एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, जुडिशरी में। बट जुडिशरी इन अ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जुडिशरी नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसके लिए बेनिफिशियल है, सोसाइटी के लिए, ठीक है, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। इनफैक्ट सोसाइटी नहीं, इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है। सोसाइटी तो बाद में है, पहले इंडिविजुअल के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत जरूरी है। तो इट इज अ लॉस एंड इट इज गिविंग टू मच पावर टू द स्टेट। अभी समझ में आया, this happened, then it gets violated. Judicial review. Okay, now judiciary does a review. Judiciary does a review in two contexts. जुडिशरी जो है रिव्यू करती है दो कॉन्टेक्स्ट में। एक कॉन्टेक्स्ट में रिव्यू करती है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। एंड सेकेंड इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। So it reviews both procedure established by law and the due process of law. Now this is explicitly mentioned in the article 21, right to freedom to, right to life and personal liberty, ठीक है, as per procedure established by law. So this is specifically mentioned in the Constitution. Now judicial review is an American concept. जुडिशियल रिव्यू क्या है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट, इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही यूके का कॉन्सेप्ट है। इंडिया का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इंडिया का एक ही कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इंडिया के पास में एक ही कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर, उससे अलग नहीं है। हाँ, वो पहले से था। वेलफेयर स्टेट, यू विल रीड इन योर हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में वुड्रो विल्सन का प्लान आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, 14 प्लान समथिंग है वुड्रो विल्सन का, ठीक है, इन अमेरिका। वो एक्चुअली वेलफेयर मॉडल है, ठीक है, वो पहला है, पर ऑफिशियल वो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। हमारा तो रिटर्न है, हमने तो मान ही लिया है वेलफेयर। अभी तो पूरा वर्ल्ड ही वेलफेयर है। अब तो कोई ना ही कंप्लीटली कोई कम्युनिस्ट है, ना ही कंप्लीटली कोई कैपिटलिस्ट है। देयर इज वन टाइप ऑफ a state that we have, that is a welfare state right now in the world, ठीक है। Either it is a theocratic country, communist country, autocrat, कुछ भी हो, सब जगह पे, ठीक है, वेलफेयर चल ही रहा है। ओके, that is the best achievement of Marx. ये मार्क्स का अल्टीमेट अचीवमेंट है, वेलफेयर स्टेट। उससे ज़्यादा मार्क्स का कोई अचीवमेंट नहीं है। ओके, so I criticize everybody and I follow everybody. That is the best part. Being a teacher, that is the best part for you. Okay, so procedure established by law
and due process of law. Anybody can tell a difference on this? मतलब लॉ मेकिंग तो हो गया ना, दोनों जगह से पास हुआ ना, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट का असेंट मिला, स्टेट्यूट बुक में मिला, इससे नींद आ रही है? ओके, प्रोसीजर स्टैब्लिश है, आप फॉलो करेंगे। प्रोसीजर स्टैब्लिश है तो फिर वायलेशन कैसे होगा? गलत कर रहे हैं। ओके फाइन, सी हियर, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, रिलैक्स, छोड़ दो, बता रहे हैं। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, इट इज एग्जामिन्ड अंडर द जुडिशियल रिव्यू टिल मेनका गांधी केस, ठीक है, 1980 मेनका गांधी केस तक के इसे हम यहीं तक देखते थे। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, व्हाट इट डज मीन, यू ओनली एग्जामिन you only examine the executive action, ठीक है। क्या किस एक्शन को हम एग्जामिन करते हैं सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में? एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है। एक तो व्हाट वी डू, प्रोसीजर जो स्टैब्लिश बाय लॉ है, आप उसको एग्जामिन करते हैं कि ये लॉ बराबर से फॉलो कर रहा था कि नहीं, ठीक है। गेटिंग इट? एनी क्वेश्चन? नो। इवन in the terms of making of legislature, ठीक है, in the terms of making of legislature, whether the legislature has followed the principles according to the constitution or not. Law is, constitution is also a law document, ठीक है, तो उसने उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है, ठीक है, तो वो देखता था, ठीक है। दैट इज मोस्ट लाइक अ एग्जीक्यूटिव एक्शन ही देख रहा है वो। लेजिस्लेचर के ऊपर क्वेश्चन नहीं है जुडिशियल रिव्यू में, देयर इज नो क्वेश्चन ऑन द legislature, the intention of legislature while framing the law. Now due process of law is actually American principle. America are very smart people. Due process of law is an American principle, okay, ये यूएस का प्रिंसिपल है, given by US. Now what does examine in this due process of law? Due process of law, simple, it understand the intention of legislature. Why you want to make this law? Why you want to make a law? पहले सबसे important, why you want to make a law? Intention of legislature, ठीक है, fine. Now this law made by the legislature, that is intention. Intention should have a reasonable, you can say rational ground of making such law, and this rational ground should not violate natural rights of the individual. बहुत फायदे, फंडामेंटल राइट बहुत, एक्चुअली फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट इज एब्सोल्यूट इन नेचर, ठीक है,
फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। नेचुरल राइट में 3 ही राइट है सिर्फ, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये 3 ही है एक्चुअली, ठीक है। फंडामेंटल राइट बहुत सारे हैं। फंडामेंटल राइट बेसिकली कॉम्प्रोमाइजिंग राइट है, ठीक है। और नेचुरल राइट एक्चुअली में एब्सोल्यूट इन टर्म्स है, ठीक है। इट एग्जामिन्स द नेचुरल राइट। उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमने दिया है, लाइफ पे भी है, सब पे है, ठीक है। इसी के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए तुम्हारे पास में देने का, एंड इट शुड नॉट अल्टीमेटली इन्फ्रिंज दिस। फंडामेंटल तो करते ही है ना इन्फ्रिंज, तभी तो स्कोप देगा ना फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट तो इन्फ्रिंज है ही है आपका, ठीक है, क्योंकि आपका आर्टिकल 17 को छोड़ के आपके उसमें कोई फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। सारे ही सबसे ज़्यादा बेसिकली सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट है आपके पास में 21, सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है फंडामेंटल राइट्स में, उसी का सबसे ज़्यादा इंटरप्रिटेटेड है। पर उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि दैट पर्टिकुलर राइट्स इज एक्चुअली सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन भी उसी पे आता है, ठीक है, ओके। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की आप बात कर रहे हैं या रीजनेबल ग्राउंड जो आप बात कर रहे हैं, इट शुड नॉट वायलेट दिस, और देयर हैज टू बी प्रॉपर साउंड रीजन टू वायलेट दिस, ओके। दिस इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ, it examines not only the judicial executive but it examines the legislature also. प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में हम एग्जीक्यूटिव को एग्जामिन करते थे, डोमेन छोटा था, ठीक है। यहाँ पे हमने डोमेन को बड़ा कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू आपके दोनों लेवल पे है, ठीक है, हाई कोर्ट में भी और सेंट्रल में भी, ठीक है, दोनों ही जगह पे। Now, should we need multiple Supreme Court in the country? तो बेंच कहाँ कहाँ बना, अलग अलग पॉकेट्स बना दो इंडिया के, वर्ल्ड के, इंडिया के साउथ, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट। Do we need a constitutional court? Constitutional court. सुप्रीम कोर्ट तो हाईली डिसफंक्शनल है, उसकी बात ही मत करो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स देखें। नहीं तो काम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, नहीं होगा। क्योंकि देखो इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, लेकिन जैसे कि स्टेट जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट सेंटर के लॉस को भी एग्जामिन करता है, उसके ऊपर भी वर्डिक्ट देता है, सुप्रीम कोर्ट देता ही है, बट नॉट इन द केस ऑफ अमेरिका। वहाँ पे हाई कोर्ट के मतलब स्टेट लॉस और उनका सुप्रीम कोर्ट अलग है, ठीक है, मतलब उनका अलग अपना कोर्ट है। फेडरल कोर्ट में आप लेकर के स्टेट मैटर नहीं जा सकते, स्टेट लॉ के मैटर्स को आप लेके फेडरल कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है, ओके। सो वी नीड समथिंग लाइक दैट, जो हमारा अरेंजमेंट है वही ठीक है, इफेक्टिवनेस की जरूरत है। हाँ, लिख लिया आप लोगों ने, ड्यू प्रोसेस समझ में आ गया। आर्टिकल नाउ फंडामेंटल राइट्स में कितने ग्रुप्स हैं? 6। राइट टू इक्वालिटी है पहले, ओके, राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम 14 टू आर्टिकल 14 टू 18, okay, then right to freedom,
फ्रीडम, ये याद रखो क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, then right against exploitation, ठीक है, that is article 23 and 24, ठीक है। then freedom of religion, article 25 to 28, okay। then freedom of cultural and educational rights, cultural and educational rights, okay? This is article 29 and 30, okay? Then we have last is constitutional right to constitutional remedies, right to constitutional remedies, article 32. Which article is known as the cornerstone of Indian Constitution? Article 32. So लिख लेना, आएगा क्वेश्चन, आया है। Cornerstone of Indian Constitution, right to constitutional remedies, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। We'll start from article 14. Okay. निकाल दो, हटा दो। Okay. Article 14, right to equality. Equality before law and equal protection of law. Protection of, ठीक है, right to equality before law and equal protection of law. Now there are three words to before law, okay, and equal protection of law, okay. Now before law, okay, what do you understand with the word before law? What do you understand this? Before law का मतलब right to equality before law. कोई भी बंदा सभी कोई भी मतलब किसी भी बेसिस पे इकोनॉमी या फिर So everybody is equal before the law, है ना? So who is supreme? Who is supreme? Yes, law is supreme, ठीक है? Right to equality before law, ठीक है? Why this we needed this? Because there was differential law, differential law system or differential punishment and reward system. Different punishment and reward system in society, ठीक है? क्यों चाहिए हमें ये? क्योंकि क्या था सोसाइटी में डिफरेंशियल पनिशमेंट और रिवॉर्ड सिस्टम था, ठीक है? पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम द हायर स्ट्रेटा, different punishment for different crime, so the law was different for them, ठीक है? People from the lower strata, so they having more serious crime,
दे हैविंग अ लेस सीवियर पनिशमेंट. मतलब लॉ शुड बी व्हाट, लॉ शुड करस्पॉन्ड. मतलब व्हाट इज लॉ, लॉ शुड करस्पॉन्ड योर क्राइम. जो आपकी क्राइम है उसी के प्रोपोर्शन में आपको पनिशमेंट होना चाहिए. ठीक है, पहला. और जैसा आपकी एफर्ट है उसी के प्रोपोर्शन में आपका रिवॉर्ड होना चाहिए. जितना आपका एफर्ट है उसी के प्रोपोर्शन में क्या होना चाहिए, रिवॉर्ड. ठीक है. और जितना आपका क्राइम है, द प्रोपोर्शन ऑफ योर क्राइम इज इन द सेम प्रोपोर्शन दैट शुड बी अ पनिशमेंट. कहाँ अलग है पनिशमेंट? क्रिमिनल जस्टिस में हम सब सेम है, सिविल में नहीं है. सिविल में राइट टू रिलीजन पर्सनल लॉ है हमारे पास, हमने डिवाइड किया है ना उसे. पर्सनल लॉ में हमने डिवाइड कर रखा है, पर्सनल लॉ और क्रिमिनल लॉ में हमने डिवीजन कर रखा है उसके लिए. पर विद इन दैट देयर इज नो डिफरेंस, है ना. सीपीसी, सीआरपीसी, सीवीसी, सीपीसी भी है. ठीक है. ओके, तो डिफरेंशियल प्रिंसिपल है रिवॉर्ड सिस्टम. रिवॉर्ड सिस्टम सबका अलग अलग है. इक्वालिटी कहाँ मांग रहा है, रिवॉर्ड भी बराबर होना चाहिए. दोनों केसेस में बराबर हो, किसी में ज्यादा और किसी में कम ना हो. ठीक है. एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ. ठीक है, एवरीबडी इज ट्रीटेड. नाउ यू आर स्टैंडिंग हियर. ठीक है, यू एज एन इंडिविजुअल स्टैंड हियर. ठीक है. Okay. Now the law has to be made. लॉ बनाना है. ठीक है, एक लॉ बनाना है अभी. ओके, प्लीज पे अटेंशन. लॉ हैज टू बी मेड. ठीक है. आप लेकिन लॉ बनाने से पहले ये कंसिडरेशन है कि आप सब इक्वल हैं. ठीक है. अब लॉ बनेगा. लॉ क्या कह रहा है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ. ठीक है, ये हो गया इक्वालिटी बिफोर द लॉ. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, what does it mean? The law is made, it should be implemented equally. लॉ बनाया, लॉ इंप्लीमेंट कैसा होना चाहिए, इक्वली इंप्लीमेंट होना चाहिए. और ऐसा होता है देयर इज, हाँ, इंप्लीमेंट ही नहीं होता है. इफेक्टिव कहाँ नहीं है. अमीर अगर है तो कहाँ इम्प्लीमेंटेड है. थेरेटिकली होता है, प्रैक्टिकली नहीं है. दैट इज ए डिलीवरी जस्टिस सिस्टम का प्रॉब्लम है वो. पर थेरेटिकली समझो. पॉलिटी में, पॉलिटी मोस्टली देखो, जब आप पॉलिटी प्रीलिम्स के पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, यू आर स्टडीइंग पॉलिटी फॉर द प्रीलिम्स, अंडरस्टैंड इट थेरेटिकली. ठीक है. व्हेन यू आर राइटिंग पॉलिटी फॉर मेंस, write in the practical context, criticize the theory in the giving the practical example, but ultimately support theory. कंक्लूजन में अपनी थियरी सपोर्ट करो वापस से. ठीक है, ऐसे ही होता है. ये आंसर, ऐसे ही आंसर लिखा जाता है. ठीक है, क्योंकि द सोसाइटी इज रन, कैनॉट रन विदाउट थियरी. ये सोसाइटी, इतना ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ किस लिए है, एक थियरी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं. ठीक है, वो थियरी क्या है, इगैलिटेरियन सोसाइटी. राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ एन इगैलिटेरियन सोसाइटी. ओके,
right to equality before law is a principle of egalitarian society. दोनों एक्चुअली दोनों ही है, ठीक है, बोथ. इट इज टॉकिंग अबाउट egalitarian society. What is egalitarian society? Okay. हाँ, ideal यूटोपियन होता है, वो होता अचीव नहीं होता, ठीक है. egalitarian society, the least inequality in the society, least, बहुत ही कम. तो हमारी कोशिश कहाँ है? Suppose there is a perfect equality in the society. Try and understand. Okay. If there is a perfect equality in the society, what will happen? Who will your job? Who will do the job of manual labor? Motivation नहीं है करने का. नहीं, suppose आ भी गई. There is a perfect equality in the society. Nobody is rich and nobody is poor. ठीक है. And what you will do? You will say, sir, for the manual work or for my household work, somebody will not come to your house and work. Somebody will not come to your company and work. So what you will say? I will employ machineries, robots, machineries. ऐसा बना लेंगे. Then what will happen? Because of industrial revolution, what we have done? नहीं, सोच नहीं पा रहे. You're not thinking properly. Yes. What we will do? We will damage the environment. Environment का damage होना, ठीक है, translation. The cost of environmental damage is paid by poor more than the rich. Okay? It impacts poor more than the rich. वो बाद में होगा, उसके बाद होगा, ठीक है. फिर तुम क्या करोगे? You will pay price high for fresh air. You don't have a high price, you don't have a money, you have equal money, सब equal है. What you will do? You will plunge into the crime. You will murder somebody, you will take his resource with you. Then you will become rich. This is how the establishment of what happened? Establishment of kings and the queens happen in the society. That's the one beauty. गेम ऑफ थ्रोन्स किसने देखी है? सब लोगों ने देख लिया, ठीक है. उसमें एक कैरेक्टर है, यू नो दैट कैरेक्टर, जो लैनिस्टर का दोस्त रहता है, छोटे से गई. हाँ हाँ, उसके जो, तो व्हाट ही बिकम्स लास्ट? हाँ, एडवाइजर, मतलब काउंसिल का ना. उसमें एक स्टेटमेंट बोला है उसने. दैट इज अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट. एवरी हाउस इज बिल्ड बाय किलिंग समबडी. ठीक है. इट इज अ फाइट अबाउट हाउसेस, राइट? फाइन. सो इसमें ऐसे ही होता है. हाँ, नहीं हो सकती ना, पॉसिबल. हु गिव द यूटोपियन सोसाइटी का थियरी? थॉमस मोर पेन, मोर, थॉमस मोर. क्रिश्चियन, उसको तो फांसी लगा दिए थे. हाँ, फांसी लगा दी. चर्च का वो था फादर, थॉमस मोर. ओके. सो यू डोंट नीड अ परफेक्ट सोसाइटी, यू नीड अ सोसाइटी, इक्वालिटेरियन सोसाइटी. ठीक है. हमें नहीं चाहिए वैसी सोसाइटी. ओके. इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दैट इज वी शुड एंश्योर दैट while framing the law we should consider that everybody is equal. Okay. First, पहला premises इसका यही है कि we should consider everybody is equal. Equal protection of law is different. Okay. What we do in the equal protection of law, we categorize the society, but not in the terms of
We categorize only because of the physical aspect, or we categorize in the terms of economy. ठीक है? Or we categorize in the terms of minority. ठीक है? Minority in the terms of strength. Okay? So we categorize that. So this is basically equality before law is actually confused. We categorize it. Now if I want to make a law on the disability, for the disabled person, for the senior citizens, for the women especially, okay, or for the weaker section of the society. When I make a law, what I will do, I will make a law. क्योंकि एक तो लॉ जनरल बना दीजिए, बन सकता है फॉर अ मैन, फॉर अ वुमेन, सबके एक्टिव, ठीक है. पर इफ आई वांट टू मेक अ लॉ फॉर अ स्पेसिफिक नीड, फॉर स्पेसिफिक पीपल, I should not be categorizing, or I should not be, क्या करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, विद इन द ग्रुप हम नहीं करेंगे. मतलब डिसेबल के बीच में अगर मैं डिसेबल्स के लिए बना रहा हूं, ओके, ठीक है, डिसेबल्स के बीच में बना रहा हूं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल एंश्योर दैट इट इज यूनिफॉर्मली मेड एंड इट इज यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंटेड. ठीक है. So this is what right to equality before the law and right to equality or equal protection of law. So you have an equal protection of law. So the law will be same for the same crime, same punishment, for the same effort and same reward. ठीक है. Okay, getting it? कोई confusion है इसमें अभी तक तो नहीं है. Very good. इसी के लिए एविड आईसी का कॉन्सेप्ट है. एविड आईसी रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है. रूल ऑफ लॉ एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. एवी डाइसी. सो ही हैज गिवन दिस कॉन्सेप्ट, द रूल ऑफ लॉ. ओके, व्हाट ही सेज दैट देयर इज नो अदर लॉ और कस्टम्स और ट्रेडिशंस will govern the society. ठीक है. इफ इट इज गवर्निंग, ठीक है, अगर वो अनइंटेंशनली गवर्न भी कर रहा है, ठीक है, अनइंटेंशनली अगर गवर्न कर रहा है, देन ऑल्सो in that case also what will happen, it is, if there is a question on that tradition, law has to be formulated, then the law must be formulated. ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल है, मैरिटल रेप इज इन क्वेश्चन. वो एक ट्रेडिशनल नॉर्म से गवर्न हो रहा है, बट द वुमेन्स एडवोकेसी आर डिमांडिंग अ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैरिटल रेप केसेस. ओके, बिकॉज वन ऑफ द साइटेड रीजन फॉर द मैरिटल रेप केस इज, one of the major cause of rape in India is not marital rape, by the known person. Most offender is who? Offender or accused, the known to the victim. ठीक है, in which the marital rape is not counted because it is not a crime, right? Getting the point? Now this is the demand. We have to make a law. So rule of law should be. Now marital rape is governed by what? Governed by a tradition, governed by consensus. There is no specific law for that. Okay, but so it might happen that that is the reason there is an atrocities towards that. Okay, डावरी लॉ बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, वो क्राइम में टर्न हो गया, तो उसे बनाना पड़ा. ठीक है. when it becomes the law, then what will happen? The law prevail at any circumstances. Okay, getting it? So this is what Avid IC has to say about it. The law will prevail. The law is the king. Okay. So this is Article 40. Now Article 15. Article 15 says that prohibition of discrimination
of discrimination. Prohibition of discrimination against not certain ground. It is mentioned sex, race, caste, religion, and place of birth. Sure. Where there is no class. क्लास की नहीं, कैबिनेट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बताता हूँ कहाँ होता है। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। इस पर्टिकुलर आर्टिकल का सिर्फ इतना मतलब है कि ये 5 ग्राउंड छोड़ के आप किसी पे भी डिस्क्रिमिनेशन करके बना सकते हैं लॉ। दिस कैनॉट बी द ग्राउंड फॉर मेक अ डिस्क्रिमिनेशन इन द लॉ। ओके, so in the case of sex, that is gender. Okay, now we have third gender also, 3 gender, male, female and transgender. ठीक है, male, female and why we write male always first? Why not female? होना चाहिए। Don't say such thing. Transgender. Good. बहुत जमाने के बाद तो हम लोगों ने ट्रांसजेंडर को राइट दिया है। ठीक है, उनको सबसे आगे ले आओ। ठीक है, फीमेल पूरा मान जाएंगे, हमें नहीं ला रहे जबकि हमारा पॉपुलेशन आधा है। चलो, नो प्रॉब्लम। ओके, नो इशू। So you cannot have a discrimination, that you cannot make a law. Or listen, this prohibition of discrimination is not only in the terms of law, it is in the terms of, so Article 14, action of anybody. Article 14 जो था वो किसे गाइड कर रहा था? It was guiding to the legislature, ठीक है, and executive. It was guiding both legislature और executive. जुडिशरी को गाइड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी गाइडेड है, तो उसका काम ही है प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, आर्टिकल 14 टू अंडरस्टैंड द understand the psychology or the frame of mind of the founding father. दिमाग देखो उनका। आर्टिकल 14 किसको गाइड कर रहा है और किसको डायरेक्ट कर रहा है? नॉट गाइड, डायरेक्टिंग लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 15 डायरेक्टिंग एवरीबडी। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट एनीबडी। केवल आपका पूरा फंडामेंटल राइट खाली स्टेट के अगेंस्ट में नहीं है, बट पीपल के अगेंस्ट में भी है। ठीक है, सो इट इज गाइडेड और इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द एवरीवन, स्टेट कुछ भी हो। ठीक है, you cannot have a discrimination on the basis of sex, you cannot have a discrimination on the basis of race. ठीक है, so we have multiple race. कैसे है? we have mostly all the race in the country. हमारे पास सारे ही रेस हैं एक्चुअली। ठीक है, तो कॉकेशियन भी है हमारे पास, रशियन है, कॉकेशियन है, ओरिएंटल्स हैं, एस्ट्रॉइड ऑस्ट्रेलियाइड्स हैं, सब है हमारे पास। ठीक है, तो यूरोपियन रेस भी है हमारे पास, सो डोंट वरी। नाइजीरियंस भी हमारे पास में, अंडमान एंड निकोबार, विच रेस? निग्रिटो। ओके, race, so you cannot have a discrimination on the basis of race. Race is also discriminated on the basis of color also. ठीक है, कलर भी कंटेक्स्ट में है। यूएस में रेस का मतलब कलर है। ठीक है, वहाँ पे रेस का मतलब रीजन नहीं है। ठीक है, ब्राउन एंड ब्लैक एंड व्हाइट, एंड ब्राउन इज समवेयर इन मिडिल, है ना। ब्राउन एक्चुअली जब बहुत गुस्सा आता है तो व्हाइट वाला ब्राउन को उनकी तरफ ढकेल देते हैं,
ब्लैक की तरफ, ठीक है, जब बहुत प्यार आता है तो वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, दैट इज इन अ डिलेमा, व्हाइट रेस इन अ डिलेमा। बेचारे वो हु इज द वाइस प्रेसिडेंट नाउ, कमला हैरिस, बिगर बेट था। द कास्ट, you cannot have a discrimination on the basis of the caste, तो but obvious है, ठीक है, you cannot have a discrimination on the basis of religion. So although the majority belongs to the Hindu religion, but you cannot have a discrimination to the religion. पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए होता है पता है? माइनॉरिटी के लिए होता है। मेजोरिटी के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि उन्हीं का ही प्रिवेल करेगा अल्टीमेटली, ठीक है। देन प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज एथनिसिटी, ethnicity. So you cannot discriminate somebody that you belong from the northeast, you belong from the Jammu, you belong to south, you belong to west, you belong to east, ठीक है, so there should be not be discrimination on the basis of this. So apart from this you can discriminate on any ground, but this should not be the ground for the discrimination. This is strictly prohibited. Okay, हाँ, यस लिखो, ये है अलाउड है। अरे करेगी नहीं तो लॉ नहीं बनेगा। दिस इज अ वेरी ब्रॉड ग्राउंड टू डिस्क्रिमिनेट। अगर इस हाँ इसको अगर छोड़ देंगे, ठीक है, तो अगर इसमें से किसी को भी लेके ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन हो गया तो पॉसिबल है बाद। सेक्स यू टेक सेक्स, हाफ द पॉपुलेशन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। सो then you have a discrimination on the basis of class. क्लास के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक, पहले सोशो और एजुकेशन था, अब सोशो और इकोनॉमिक एजुकेशन तीनों हो गया, ठीक है। क्लास के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है? यस, देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास। वेयर? वेरी गुड। हाँ, कैसे है? कहाँ है? कहाँ रिजर्वेशन? वेरी गुड। ट्रेन पता है? ट्रेन्स कितने क्लास है उसके अंदर? ट्रेन में, ट्रेन कभी ट्रैवल नहीं किया? फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, क्या है ये? क्लास के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। तो क्लास के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है, अलाउड है, बिकॉज दैट इज इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक। जैसे कि थर्ड एसी और सेकंड एसी में, थर्ड एसी इज बेसिकली रन्स ऑन 0 प्रॉफिट, सेकंड एसी रन्स ऑन 100% प्रॉफिट, फर्स्ट एसी रन ऑन 200-300% प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड एसी में नहीं है एक्चुअली प्रॉफिट अभी, अब तो खैर अभी हो गया है क्योंकि काफ़ी रिवाइज हुआ है फेयर। स्लीपर तो गवर्नमेंट पे, जनरल का डब्बा भी गवर्नमेंट पे। ओके, सो देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। नाउ वी डू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, ठीक है, बिकॉज सोशल इन द टर्म्स ऑफ जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उन्हें अपलिफ्ट लाने के लिए हम रिजर्वेशन दे रहे हैं और डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। बट डस इट इंक्लूड्स एनी ऑफ दिस? द आंसर इज नो, ठीक है। हम लोग फंडामेंटल राइट यहाँ वायलेट होता है, लेकिन हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? उसे डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए हम लोग आर्टिकल 39A and B, ठीक है, आर्टिकल 39A and B स्पेसिफिकली मेंशंस अबाउट द upliftment for the weaker sections, ठीक है। For that the government should or the state should strive, so they taking a strive steps for educationally weaker section, okay, got it? तो class discrimination भी है, this is article 50, okay, कोई confusion नहीं है? fine।